हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड 8 का इंग्लिश 2.4 एक्सक्यूजेस अ स्किप इस लेसन की वार्मिंग अप चिट चैट के क्वेश्चन आंसर लेकर। तो इस क्वेश्चन फर्स्ट है, फॉर्म ग्रुप्स एंड चैट अबाउट द फॉलोइंग। ग्रुप्स बना के इसके अबाउट आपको चैट करना है। इसी लेसन के आपको वर्कशॉप के क्वेश्चन आंसर चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डू यू कम टू स्कूल ऑन टाइम एवरी डे? आंसर है यस, आई कम टू स्कूल ऑन टाइम एवरी डे, रेयरली आई कम लेट। क्वेश्चन सेकेंड है, व्हाट डू यू फील व्हेन यू आर लेट? आप जब लेट होते हो तो आपको क्या फील होता है, कैसा फील होता है? आंसर है व्हेन सम टाइम आई केम लेट आई फील वेरी सॉरी एंड गिल्टी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट एक्शन इज टेकन इन स्कूल ऑन लेट कमर्स? स्कूल में लेट कमर्स के लिए क्या एक्शन ली जाती है? आंसर है our teacher makes the latecomer stand out of the class or in the corner of the class. Regular latecomers are sent back home. क्वेश्चन नंबर 4 है, do you give excuses for your late coming? Are they true or false? आप लेट कमिंग पे एक्सक्यूजेस देते हो, वो सही है या गलत है, आपको यहाँ पे बताने हैं। सो आंसर है आई डोंट गिव false excuses for coming late to school. क्वेश्चन नंबर 5 है, why is punctuality so important in life? लाइफ में पंक्चुअलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? आंसर है if we are not punctual we might miss some opportunities in life, our work also delayed and that affects our success in life. एंजॉय द जोक, यहाँ पे आप जोक दिया है, आपको एंजॉय करना है। क्या दिया है? फर्स्ट, अ टीचर सेज आसिफ व्हाई आर यू crawling into the class? Asif says, I am sorry teacher, but yesterday you warned me not to walk into the class late. So, okay. B1A teacher says, Sharwari, you are regularly late to school. Don't you feel ashamed? Why do you come to school so late? Sharwari says, I am sorry madam, but on my way to school there is a road sign that says go slow. And ma'am, you have told us to always follow that road sign say. Can you underline the words in the joke that were used as excuses for late coming? तो यहाँ पे गो स्लो जो वर्ड दिया है वो लेट कमिंग का एक्सक्यूज में दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, now discuss within group and share some simple jokes about teacher and students. आपको ग्रुप में टीचर और स्टूडेंट के अबाउट जोक्स डिस्कस कर शेयर करने हैं। ट्राई टू राइट वन और टू सच जोक्स इन योर ओन वर्ड्स इन द अबव फॉर्मेट। जो अबव फॉर्मेट दिया था इसके पहले जो फॉर्मेट दिया था उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे वन और टू जोक्स राइट करने हैं। जोक फर्स्ट है, टीचर सेज डिड यू ब्रेक दिस विंडो ग्लास इन द क्लास टुडे टॉम? Tom says, not me, madam. It was my twin brother, Jerry, from our class. Teacher says, where is he? Call him quick. Tom says, he is absent today, madam. Joke number 2, maths teacher. Listen carefully. There were 10 birds on the branch of a tree. A hunter hit and fell one of them by his catapult. How many birds were there on the branch now? Neha says none. Math teacher says, how's that? Neha says, others flew away.
यहाँ पे टू रिपोर्टेड स्पीच और डायलॉग कैन बी रिपोर्टेड इन टू वेज। स्पीच और डायलॉग हम टू वेज से रिपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। व्हेन एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर आर रिपोर्टेड वी कैन कॉल इट डायरेक्ट स्पीच। स्पीकर के डायरेक्ट वर्ड रिपोर्ट किए जाते हैं उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। व्हेन एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर आर नॉट रिपोर्टेड but just its context we call it indirect speech। जहां पे एग्जैक्ट वर्ड नहीं दिए रहते स्पीकर के उसको इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। तो देखो ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के एग्जांपल्स दिए गए यहाँ पे। अमर सेड आई शैल कम टू मीट यू टुमारो संकेत। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या दिया है? डायरेक्ट स्पीच में दिया है अमर सेड आई शैल कम टू मीट यू टुमारो संकेत। इनडायरेक्ट स्पीच में दिया है अमर टोल्ड संकेत दैट ही वुड गो टू मीट हिम द नेक्स्ट डे। नोट डाउन द चेंजेस यू ऑब्जर्व इन द इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या चेंजेस आपको ऑब्जर्व हो गए वो यहाँ पे नोट डाउन करने हैं। तो यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब इज चेंज, सेड एंड टोल्ड, सेड की जगह टोल्ड दिया गया है इनडायरेक्ट स्पीच में। इन्वर्टेड कॉमाज आर रिमूव, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा रिमूव किया गया है। आफ्टर दैट चेंज इन टेंस, टेंस चेंज किया है, शैल की जगह उल्ट डाल दिया है। उसके बाद चेंज इन प्रोनाउन, प्रोनाउन में चेंज कर दिया है, आई की जगह ही और यू की जगह हिम ले लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट सेंस वाज रितेश अर्ली? कौन सी सेंस से रितेश अर्ली है? आंसर, एक्चुअली रितेश कम टू स्कूल वेरी लेट when the first period was about to end, so the teacher said that Ritesh was early for the second period. Okay. Question second है, what was the first reason why Ritesh was delayed? रितेश का डिलेड होने का फर्स्ट रीजन क्या है? आंसर है, when Ritesh was walking to school, he heard a scream from the main road. He went there to find out if someone needed help. He saw a person lying near the pavement in pain. Suddenly, another man came running out of the shop with the packet in his hand. The shopkeeper also ran after him, shouting, "Chor, chor, catch him!" Ritesh ran after them, but they vanished round the corner. That was the first reason for being late to school. Question number 3 है, what made Ritesh go back to the shop? Answer, Ritesh went back to the shop when he realized that he had forgotten his bag at the shop. Question 4 है, when did the dog finally leave the school bag? Finally dog ने स्कूल बैग कब छोड़ी? आंसर है, when the shopkeeper gave Ritesh some biscuit and he offered the biscuit to the bag, the dog left the school bag. Question number 5 है, how did Ritesh describe the same dog the second time? डॉग ने सेम डॉग सेकेंड टाइम कैसे डिस्क्राइब किया? आंसर है, at first Ritesh described the dog as a hug, hairy and brown colored, but the second time he said that it was small. Question number 6 है, why did Ritesh refuse to take part in the story writing competition? Can you believe his last excuses for refusing the take part? रितेश ने स्टोरी राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मना क्यों किया और उसका जो लास्ट रीजन है उस पे आप विश्वास रख सकते हो क्या? आंसर, I think Ritesh refused to take part in the story writing competition because if he showed he's interested in the story writing competition, his teacher would know the excuses that he had made for late coming. According to me, the last excuses for refusing to take part is really unbelievable because it seems that
He is very good at making up stories. Thanks for watching video. If you like my video, subscribe my channel, press the bell icon, like करो, कमेंट करो, शेयर करो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.